Namaste, I Jv'n Neha Sharma, JVWU University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. So our today's topic is .NET namespaces and metadata. So in previous lecture, we discussed about the JIT compilers and MSI, Microsoft Intermediate Language. So there is a term metadata, right? So Microsoft .NET metadata. So metadata in .NET is binary information which describes the characteristics of a resource. The information includes description of the assembly, data types, and numbers with their declarations and implementations, and reference to other types and numbers, security partitions, etc. So a modules with metadata contains everything that need to interact with the another module. So this is basically metadata in .NET, and metadata in general data about data. So it contains the detail of different data types, assemblies, declarations, and implementations of different objects and numbers. Okay, so during the compile time, metadata created with Microsoft Intermediate Language and stored in file called manifests. ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि कंपाइल टाइम पे जो है मेटाडेटा जो है क्रिएट होता है एमएसआईएल के साथ, है ना, जो पी में स्टोर होता है। तो उस फाइल को हम क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट बोलते हैं, एंड बोथ मेटाडेटा एंड एमएसआईएल टुगेदर रैप्ड इन पीई फाइल, राइट? So during the runtime of program, JIT compiler of CLR uses the metadata and convert MSIL into native code. तो इस मेटाडेटा को यूज करके जो हमारे CLR जो है, जो JITs हमें प्रोवाइड कराते हैं, इस मेटाडेटा को यूज करके MSIL से नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है JIT। So when code is executed, the runtime load metadata into memory and references to discover information about your code's classes, members, inheritance, and so on. So moreover, metadata eliminating the need of ITL files, the intermediate definition language files, header files, or external method of component reference. So metadata के थ्रू जो है वो बेसिकली आपका प्रोग्राम जो है JIT MSIL से नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट .NET मेटाडेटा। ठीक है, तो अब आपको समझ आया होगा कि .NET मेटाडेटा का सिग्निफिकेंस क्या है और .NET मेटाडेटा होता क्या है बेसिकली, राइट? देन नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोसॉफ्ट .NET नेम स्पेसेस। तो नेम स्पेसेस की बात जो है हमने एचसीएल में की थी जब हमने .NET कॉम्पोनेंट फ्रेमवर्क पढ़ा था। तो namespaces are the ways to organize .NET Framework class libraries into a logical grouping according to their functionality, usability, as well as category they should belong to. Or we can say namespaces are the logical grouping of types for the purpose identification. तो namespaces क्या है बेसिकली? लॉजिकल ग्रुपिंग है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के फंक्शनैलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। The .NET Framework class library is a large collection of thousands of classes, and these classes are organized in hierarchical tree. The system namespaces is the root for the type in the .NET Framework. So we can uniquely identify any class in the .NET Framework class library, and by using the full namespaces of the class. So in .NET languages, every program is created with default namespaces. So programmer can also create their own namespaces. मतलब .NET जो है वो प्री-डिफाइंड आपको namespaces तो दे रहा है, सिस्टम इनबिल्ट namespaces तो दे रहा है, आप कस्टम namespaces भी इनबिल्ट आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे .NET लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, मतलब यूजर डिफाइंड namespaces, ओके, एंड दीज आर सिस्टम डिफाइंड namespaces। लाइक ये हमने एचसीएल में देखे हुए थे, डिफरेंट namespaces मैंने आपको बताए भी थे। तो यहाँ पे हम हर एक namespaces को डिटेल में देखेंगे कि इसका काम क्या होता है। जैसे सिस्टम namespaces, तो इसकी लॉजिकल ग्रुपिंग कर रहा है जितने भी बेस क्लासेस हैं, फंडामेंटल क्लासेस है फॉर डेटा टाइप, इवेंट्स एंड इवेंट हैंडलर्स, उनकी ग्रुपिंग कर रहा है सिस्टम नेमस्पेस। देन सिस्टम डॉट कलेक्शंस, definitions of collections of objects such as lists, queues, and dictionaries. Then system.data, .NET architecture used to access database. So access database के लिए system.data है। system.join जो है वो क्या है, graphics के लिए है, to join on screen, printer or any other graphic device.
Then system.io for input output reading writing files, system.link to support language integrated queries. हमने पढ़ी थी ये .NET framework component में language integrated queries, तो उसके लिए system.link होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, परमिशंस देने के लिए system.security namespace है. Then system.threading for multi-threading programming, then system.web.services for web services, then system.windows.forms for the window forms, WF जो हमने पढ़ा था. ठीक है, then system.xaml for supporting of the XAML processing. XAML is stand for transferring the data. Standard array basically for transferring the data. So this is all about the .NET namespaces and the .NET metadata. Thank you so much.